So welcome again guys. Here we will be building a Kivy based application, something like a gallery की तरह, जिसमें you can look for your photos, you can just watch a bunch of photos over there, and वो हम बनाएंगे Python से. So let's just get started with it. So first of all you need to make sure कि Kivy आपके सिस्टम में इंस्टॉल है. To do this, so you need to just run pip install Kivy onto your terminal or command prompt, whatever you prefer. पावर शेल पे कर लो, कमांड प्रॉम्प्ट पे कर लो, जिसमें कर रहे हो. लिनक्स पे है तो जाओ यार, मेरे को नहीं पता क्या करते हैं, पर बैश से कुछ करते हैं. आई थिंक बैश पाइथन इंस्टॉल, मेरे को नहीं पता, बट आई जस्ट नो फॉर विंडोज़ पिप इंस्टॉल कीवी, दैट्स इट. when you're done with it you can just write the codes from screen. It's basic, very simple. Kivy.ux image. The reason we are importing image क्योंकि image तो दिखानी है. And you can see on the side where we have the folders, I have already one folder named image, from where our Kivy will take the images. So kivy.core.window import window, and now since we have the window, now we want the scroll view. So kivy.uix scroll view it will be, and from that we are going to import the scroll view. Okay, so it will be scroll view, yep. Now what else do we want? We want a pop-up, because when we click on the image I want it to pop up and get a bit bigger so I can watch the full photo properly. So that is what I want, so I need pop-up for that. So import pop-up. Yeah. Okay, now what else we want? We want operating system, so OS, that would be, yep, perfect. We're going perfectly. Now what else do we want? So now we are going to create a class. We are going to create a class, yep, और उसको नाम देंगे गैलरी लेआउट, बिकॉज वही तो चाहिए हमें. अब गैलरी का एक लेआउट चाहिए विच विल इंक्लूड बॉक्स लेआउट एज आर्ग्यूमेंट में बॉक्स का लेआउट होगा. सो गैलरी का लेआउट यहाँ पे तैयार होगा कि कैसा दिखेगा, मतलब हमारा जो इंटरफेस होगा वो बेसिक कैसा दिखेगा, अंदर का सब इमेजेस कैसी होंगी, कितने डिस्टेंस पे, सब कुछ. दैट ऑल विल बी डिफाइंड ओवर हियर, कि डिफरेंस कितना होगा उन दोनों के बीच में, और सब कुछ ऐसा बॉक्स लेआउट पे डिफाइन करेंगे. तो इनिशियलाइजेशन से शुरुआत करते हैं. इनिट and click on the init and done. Everything is pre-done for me by VS Code. So ये अभी self dot orientation is equal to somewhere 10. Yeah, 10 will be fine, बस ठीक रहेगा. और उसके बाद स्पेस और पैडिंग भी देंगे to keep it better looking. तो स्पेसिंग दे देते हैं 10 की, 10 की, 19 की कहाँ है. ओके, सेल्फ पैडिंग वो भी 10 की दे देते. दैट वुड बी ऑल्सो वेरी गुड. एंड फील फ्री टू चेंज दीज नंबर्स, दीज आर जस्ट फॉर मेकिंग इट लुक प्रीटी इंटरैक्टिव. बदलना बदल सकते हो, चेक करके देख लो यार कैसा लगता है. अगर बदल के देखो अच्छा लगता है तो अच्छा रखो, बेटर होगा. इमेज डॉट डायरेक्टरी, इमेजेस कहाँ से आएंगी, गैलरी के अंदर इमेजेस की ज़रूरत होगी. एंड यू कैन सी ऑन द लेफ़्ट और राइट होता है ना, हाँ वो राइट साइड होता है, शायद लेफ़्ट होता है. मेरा लेफ़्ट, तुम्हारा जो भी साइड में दिख रहा है ना वो सारी डायरेक्टरीज है सारी की सारी. देयर यू कैन सी एन इमेजेस डायरेक्टरी, तो वो इमेजेस डायरेक्टरी में वो जाएगा टू गेट दोज फाइल्स. एंड दैट इज़ वाई वी आर गिविंग इट os path dot join os get cwd images. Okay, so now just let's define images files. F for f in os list dir list dir. Okay, now images directory.
os path dot join os path डॉट जॉइन. उसके बाद यहाँ पे इमेज की डायरेक्टरी हम बताएंगे path डॉट जॉइन. इट विल बी समथिंग लाइक ओके ओके हो गया. यप. नाउ द इमेज डायरेक्टरी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट विल बी और उसके बाद कॉमा एंड आई थिंक एफ. Yeah, this will be pretty fine, I think. Now एक लूप बनाएंगे फॉर लूप जो कि सारी इमेजेस को यहाँ पर लेके आएगा. फॉर इमेज फाइल इन इमेज फाइल्स. तो अभी कहाँ से लानी है ये कौन बताएगा. तो ये तो बता देते हैं. तो इमेजेस का पाथ सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि ये सब आएगा कहाँ से. तो सबसे पहले हम इमेजेस के पाथ के लिए कैसा वेरिएबल बना देते हैं. इमेज अंडरस्कोर पाथ रख देते हैं यार. सिंपल. आप दिमाग नहीं लड़ाते. os डॉट पाथ डॉट जॉइन. नॉट जॉइंस. जॉइन होना चाहिए. पाथ डॉट जॉइन. यप. इमेज डायरेक्टरी इमेज फाइल्स. फाइल सॉरी नहीं फाइल्स नहीं सिर्फ फाइल क्योंकि फाइल में अब हमें वो सब कुछ चाहिए. इमेज डायरेक्टरी का सारा सामान. सो परफेक्ट. दोनों चीज़ें ज्वाइन हो गई. अब वील हैव दैट एज पर आवर रिक्वायरमेंट. की रिक्वायरमेंट हमारी क्या है. तो इमेज विडगेट. विडगेट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम एसिंक इमेजेस को कॉल करेंगे. वेयर वील जस्ट डिफाइन द सोर्स. की सोर्स क्या है उसका. तो इमेज पाथ जहाँ से आ रही है वो इमेज पाथ है. उसका साइज़ क्या है and the height of the widget. Size hint. Size underscore hint. Then we'll have the height defined. Height is equal to window dot height divide by 2 or divide by 3. Let's just keep it. एक विंडो में 3 पिक्चर्स आ सकती हैं. That would look fine. So till here it is crystal clear and done. So now we can move to the further ones, which will be image widget dot bind. So before moving further I would just say that ये इस kinter के we'll have not for this we'll have a tutorial series starting from tonight. Tonight I'm going to upload my first video on this series of kinter where we will have somewhere around 10 to 12 videos of kinter where we learn from basic to everything. We are going to create calendars, we are going to create buttons, we are going to create drop downs or whatever those things are which are included into a application. We are going to do every single thing. Not kinter, sorry, Kivy. I'm sorry, Kivy. Everything that we can do from Kivy. And we are going to create applications through Kiwis, like button application, simple, like drop downs with Kivy and every single thing that we can do with Kivy. Sounds great, right? So tonight just stay tuned. Before 9 I think it will be on to it. Okay, so pop up underscore content. No, sorry, I'm walking backwards. Show image if widget dot collide underscore point into touch dot pause
And just know one thing, that Python is not a lot into application development. It is likely into the game development, but not into too much of an application development. So you just cannot get a lot more, interactive and very very graphical type of applications through Python. But you can get a very basic and very interesting applications through it, like calendar applications or to-do list kind of things you can create with using Python only. And we are going to do that kind of things starting tonight. Okay, let's just focus on this thing, what we are doing right now. Focus on now. Tomorrow is unpredictable. If a pop-up is equal to, let's just create another variable calling pop-up. तो पॉपअप का मतलब हो जाएगा बड़ा वाला पॉपअप, कैपिटल P वाला पॉपअप जो ऊपर हमने कॉल किया था, हाँ ये वाला. कंटेंट इज इक्वल टू पॉपअप अंडरस्कोर कंटेंट, ऊपर वाला पॉपअप कंटेंट. अभी यहाँ नीचे कंटेंट में ले लेंगे और साइज़ का हिंट दे देंगे 0.8. मतलब इमेजेस जो दिखेंगी उनका ये, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, आस्पेक्ट रेशियो होगा जो इमेजेस दिखने वाली हैं उनका. बुझे? तो अभी 0.8 कर देते हैं यहाँ पे. ये क्या है? हाँ, पॉपअप डॉट ओपन. अभी बस ये ख़त्म ही होने वाला है. अब सिर्फ एक आखिरी क्लास बचा है, विच विल बी दी एंड ऑफ दिस. और अंत होगा अभी इसका गैलरी ऐप, जिसके अंदर ये सब कुछ होगा. हमारा गैलरी लेआउट होगा, स्क्रॉल व्यू होगा, सब कुछ इसके अंदर होगा. तो जो भी हमने बनाया सब कुछ यहीं पे बुला लेंगे. सो लेट्स जस्ट डिफाइन समथिंग विच विल बी बिल्ड. कि बनाओ, चलिए बनाते हैं, बिल्ड करते हैं. कर लिया बिल्ड. रिटर्न सुपर बिल्ड. ये रिटर्न सुपर बिल्ड, जैसे सुपर बिल्ड की ज़रूरत नहीं, हमें रिटर्न स्क्रॉल व्यू चाहिए, क्योंकि स्क्रॉल व्यू हम एट द एंड ऑफ द टाइम लेने ही वाले, मंगवाने वाले हैं. सो इसको एक अलग नाम के वेरिएबल से मंगवाते हैं, बिकॉज इसको हम डिफाइन भी अलग नाम से करने वाले हैं. तो अंडरस्कोर ले लेते हैं यहाँ पे. चलो, तो यहाँ पे गैलरी लेआउट के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, जिसके अंदर हम अपना गैलरी लेआउट वाला फंक्शन कॉल करेंगे. राइट, जो हमने बनाया फंक्शन नहीं, वो क्लास बना है, तो क्लास कॉल करेंगे अभी यहाँ पे हम, पूरा का पूरा क्लास ही, जिसके साथ सब कुछ यहाँ पे पहुँच जाएगा. सो वी कॉल्ड इट. नाउ इट्स टाइम फॉर स्क्रॉल व्यू. स्क्रॉल अंडरस्कोर व्यू. अभी स्क्रॉल व्यू वाला क्लास मंगवा लेंगे. सही जा रहा है. अभी स्क्रॉल व्यू डॉट एड विडगेट गैलरी लेआउट. अभी यहाँ लिख देते इफ अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू मेन अंडरस्कोर वाला, सादा मेन नहीं. तो अभी गैलरी रन हो गया तैयार. नाउ वी आर रेडी टू रन आवर एप्लीकेशन. सो हियर यू सी, किसी भी इमेज पे जाके क्लिक कर दो एंड यू कैन सी दिस. नो टाइटल वाइटल कुछ है नहीं, बट यू कैन क्लिक ऑन द इमेजेस एंड कैन सी सारी की सारी images you are able to see. So that was all of it. See you in the next one.